इस क्वेश्चन में बोला है 1 mole of A in 1 liter vessel is maintained at constant temperature and it shows the equilibrium as follows. And if the equilibrium pressure is 13/6 times of the initial pressure and the equilibrium concentration of C is 4/9 of the equilibrium concentration of A, then we are asked to calculate equilibrium constant for the first reaction, that is Kc1, and the equilibrium constant for the second reaction, that is Kc2. ये सवाल सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप का है एंड इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.11 एंड 0.14. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो ध्यान से सुनो बच्चों. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. So students, we are given with these two equilibriums and initially we are given with 1 mole of A. Clear? So let's discuss this in detail. So students, we are given with these two equilibriums. A in gaseous state gives rise to B in gaseous state plus 2C in gaseous state, and next this C which is formed here, that will serve as a reactant for the next equilibrium, and this C in the gaseous state gives rise to 2D and 3B, and both of them are in a gaseous state. So in a question we are given that initial number of moles of A is 1, so initially number of moles of all these products will be 0. Correct? So as reaction proceeds, let's say at equilibrium इसका A amount decompose हुआ, so let's say it becomes 1 minus A. Number of moles of B formed will be A and C का A हो जाएगा and उसके stoichiometric coefficients इसको multiply करेंगे, because हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जब ये 1 मोल ऑफ ए डिकम्पोज होगा तब ये 2 मोल्स ऑफ सी फॉर्म हो जाएगा. तो स्टोइकियोमेट्री है 1:2. सो व्हेन A मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड, देन 2A मोल्स ऑफ C विल गेट फॉर्म्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 2A. समझ में आया बच्चों? नाउ सो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए द रिएक्टेंट इज C. सो अपने पास C के कितने मोल्स है? 2A मोल्स है. करेक्ट? तो ये 2A मोल्स से लेट से B मोल कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 2A माइनस बी. तो यहां पे भी 2A माइनस बी लिख दूंगा मैं. तो अपने पास C के कितने मोल्स है? 2A माइनस बी. जब ये B मोल कंज्यूम हुआ तब ये B मोल फॉर्म हो जाएगा और ये B मोल फॉर्म हो जाएगा, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3. सही है? सो फाइनली हाउ मच B वी आर हैविंग? पहले से ही A है, बाद में ये 3B ऐड होगा, तो number of moles of B with us is A plus 3B, right? That is why I have explained here. These are the initial number of moles. These are the moles at equilibrium. So total number of moles at equilibrium will be number of moles of A at equilibrium plus number of moles of B at equilibrium plus number of moles of C at equilibrium plus number of moles of D at equilibrium. So I have added them, and upon addition we will get 1 plus 2A plus 4B. As we know, PV is equals to nRT, right? So we can say pressure is directly proportional to number of moles. So therefore we can say that the pressure is directly proportional to number of moles, that is, let's say n. So we all know that initial pressure, let it be P initial, will be directly proportional to initial number of moles, and we are having initial number of moles equal to 1, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है initially we are starting with the 1 mole of A. Correct? And pressure at equilibrium will be directly proportional to equilibrium number of moles, and equilibrium number of moles कितना है अपने को? 1 plus 2A plus 4B. समझा? So in a question it is given that equilibrium pressure is 13/6 into initial pressure. Correct? So हम लोग क्या करेंगे? इसको ये साइड लेके आएंगे. So we will get pressure at equilibrium upon pressure at initial will be equal to 13/6. So let's say ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, then upon dividing this two equation we will get P equilibrium upon P initial will be equal to 1 plus 2A plus 4B upon 1. सही है? तो मैं दिस रेशियो को नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा. So that is why I have written here equilibrium number of moles upon initial number of moles, that is equal to 13/6. So just cross multiply करने के बाद let's say we get this equation. Let it be equation number 1. Now question में बोला है equilibrium concentration of C is equals to 4/9 into equilibrium concentration of A. From reaction we can say that equilibrium concentration of C is 2A minus B,
and the equilibrium concentration of A is 1 minus A. So upon solving this, we get this equation. If we write this in the form of A, we'll get A is equals to 1 plus 9B upon 22. So on substituting the value of A in equation 1, we get अपना equation 1 क्या है 12A plus 24B is equals to 7. तो इसको यहाँ पे A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट B इक्वल्स टू 0.167. तो हमें B मिल गया. नाउ B का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, देन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ B वी कैन आल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1 वी गेट A इज इक्वल्स टू 0.25, राइट. सो हमें A मिल गया एंड B मिल गया. So let's write this equilibrium. So first equilibrium is A giving rise to B plus 2C. इसका equilibrium constant is Kc1 is equals to concentration of B into concentration of C raised to 2 upon concentration of A. So on substituting all the values of equilibrium concentration, we get equilibrium constant 1 as 0.11. So similarly for this equilibrium, we will write Kc2 is equals to concentration of D raised to 2 into concentration of B raised to 3 upon concentration of C, that is equals to 2B square into A plus 3B cube upon 2A minus B, and on substituting the value of A and B, we will get the Kc2 as 0.14. Clear? So our value of Kc2 is 0.14 and the value of Kc1 is 0.11. That is why option number A is the answer. So thank you very much students for listening. ऐसे बेहतरीन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, then please like the video, share it with your friends and subscribe the channel. मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you.